Welcome back to my YouTube channel. My name is Amit Chakravarti and you are watching the last episode of our Kashmir trip. After falling in love with Gulmarg, it is time to move on to our next destination. पर एक सवाल हमारे मन में था, क्या गुलमर्ग से सुंदर धरती पे कोई और जगह हो सकती है? इन्हीं सवालों को मन में लिए हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े। गुलमर्ग से पहले हम टनमर्ग बेस की तरफ वापस उतरे। हमें वापस जाते टाइम एक अलग ही मौसम और एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। रास्ता जितना सुंदर था उतना ही रिस्की था, क्योंकि आपको सिंगल वे रोड से जाना पड़ता है। of our Kashmir trip and गुलमर्ग से हम टनमर्ग आए एंड टनमर्ग से 3-3.5 किलोमीटर है एक वाटरफॉल, दैट इज द ट्रंक वाटरफॉल। इट इज ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड यू कैन गेट द व्यू ओवर हियर। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, पानी गिरते से ही बर्फ बन जा रहा है। यहाँ के फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हमारे हाथ पूरी तरीके से जम गए थे। Taking photos, videos here was an extremely tough job. And this is what makes Drang a unique experience from any other waterfall. I would highly recommend this place to everyone. गुलमर्ग से वापस जाते टाइम इस waterfall को कभी मिस मत करना। और इसी के बाद अब हम निकल पड़े कश्मीर की हंसी वादियों से होकर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो वेलकम टू अवर 4th एंड फाइनल एपिसोड ऑफ कश्मीर। श्रीनगर से पहलगाम जाने के रास्ते में आपको काफी सारे सैफरॉन फील्ड्स देखने मिलेंगे। We stopped at अनमोल केसर शॉप to get some original कश्मीरी केसर एंड कावा। और यहाँ पे हमने सीखा कि असली केसर की पहचान कैसे करते हैं। पहले केसर होता है इस शेप का, इसका नाम पड़ता है लच्छा की माने उतारा। केसर पहले फूल के अंदर ऐसे ही निकलता है। आप कैसे पहचानो केसर ओरिजिनल के डुप्लीकेट है, वो मैंने बात है। केसर की जब भी आप केसर की एक पत्ती हाथ में उठाओगे ना, इसका ना सार ये आगे से मोटा होता है। अच्छा। ये अगर पीछे देखो ना थोड़ा सा येलोइश होगा और पतला होगा, इसकी एक पहचान। दूसरी पहचान, आप इसको 1-2 पत्ता ले लो, आगे वाले दांतों से चबाओ, हल्का से कड़वा लगेगा ओरिजिनल है, अगर ये मीठा लगेगा केसर नहीं है। इसकी दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल करोगे दूध के अंदर, बिरयानी, पुलाव, खीर वगैरह, उसमें गलना नहीं चाहिए, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। ये अपना कलर दे देगा, पता ऐसे रहेगा। अगर ये किसी चीज़ में डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, केसर नहीं। घर में केसर को खाली पानी से बचाना, पानी का हाथ से यूज़ नहीं करना, सर्दी आएगी। पहलगाम के रास्ते में ऐशमुकाम दरगाह पड़ता है, जहाँ बजरंगी भाईजान मूवी की भी शूटिंग हुई थी। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी टुक सम फोटोज एंड हेडेड स्ट्रेट टू पहलगाम वैली। यहाँ मोस्टली पूरे रास्ते की एक तरफ आपको झेलम की ट्रिब्यूटरी लिड्डर रिवर देखने मिलेगी। एंड हाउ द वेदर चेंजेस हियर एवरी मिनट। जस्ट लुक, अगेन वी विटनेस स्नोफॉल ऑन आवर वे। So we reached पहलगाम वैली अराउंड 1 PM एंड पहुंचते साथ आपको यहाँ काफी सारे घोड़े रास्ते में देखने मिलेंगे। एक्चुअली पहलगाम वैली के सारे पॉइंट्स देखने के लिए आइदर आपको यहाँ पे ट्रेकिंग करना पड़ता है या तो फिर आप हॉर्स राइड बुक कर सकते हो। रेट्स डिपेंड करते हैं आप कितने पॉइंट्स चूज करते हो उसके ऊपर। वी बुक्ड अराउंड 2000 पर हेड टू कवर टिल द बाइसरन पॉइंट। एंड बाय द वे, पहलगाम इज एक्चुअली कॉल्ड द वैली ऑफ शेपर्ड्स। तो अब क्या, हम चल पड़े हैं दीवाने मस्ताने के साथ। एंड इफ यू आर वंडरिंग हु दीज टू आर, तो मैं अभी सवारी कर रहा हूँ दीवाने पे एंड रितिका की सवारी है मस्ताना।
भाई साहब, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बर्फ की सफेद चादर से ढके इस पहाड़ पर घुड़सवारी करना। जितना ये कूल लग रहा होगा उतना ही एक्चुअली में ये स्केरी है। भाई मुझे तो पूरा यकीन था कि ये दीवाना घोड़ा मुझे खाई में गिरा के ही मानेगा। राइडिंग हॉर्स इन स्नो इज ऑल टुगेदर अनदर एक्सपीरियंस। एक तरफ खूबसूरत वादियां, दूसरी तरफ खाई में गिरने का डर। भाई दीवाना मस्ताना तो शायद ट्रेंड होंगे, बट हमारे लिए तो ये स्नो में हॉर्स राइडिंग ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। विंटर्स में एवरीथिंग लुक जस्ट अमेजिंग हियर। समर्स में शायद यही स्नो पिघल जाता है और एक वाटरफॉल साइड बाय साइड देखने को मिलता है। राइट नाउ ये वाटर पूरा फ्रीज था। चलो भाई, अब भैया से ही सुन लेते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। सर कन्यामर्ग जो यहाँ, हाँ कश्मीरी में हम बोलते हैं कन्या को पत्थर जो जाते हैं, आप बोलते हैं पत्थर, वो उसको बोलते हैं मर्ग माने मैदान। मर्ग मतलब मैदान। हाँ, जो वो पांडव लोग थे यहाँ का 5 भाई लोग, उन्होंने यहाँ से पत्थर लेके पहलगाम में गोरुशंकर टेम्पल और महाबलेश्वर टेम्पल बनाया। इसलिए जगह का नाम बन गया कन्यामर्ग। हाँ, कन्यामर्ग कहते हैं इसको। अभी हमको जाना है आगे मनीसुजर। एंट्री पॉइंट मिनी स्विट्जरलैंड और यहाँ आके वी नीड टू टेक टिकट्स 30 रुपीज फॉर ईच एडल्ट। सो आई एम गोइंग टू टेक द टिकट्स। I think it was a time to give a break to Dewana and Mastana and explore this place by ourselves. There is no wonder why this place is called Mini Switzerland. कश्मीर डे 6 और फाइनली हम पहलगाम पहुंच चुके हैं। तो आई जस्ट टेल यू कि आपको पहलगाम में क्या क्या देखने मिल सकता है एंड हाउ द डे इज गोइंग टू बी। जस्ट एज वी रीच पहलगाम आपको नीचे एक बेस लोकेशन पे छोड़ा जाएगा। गाड़ी उसके ऊपर नहीं जा सकती है, सो यू नीड टू टेक हॉर्सेस और घोड़ों की मदद से आप ऊपर तक आते हो। तो दे चार्ज यू सम नॉमिनल फीस, इट्स अप टू यू हाउ यू बार्गेन and then they show you how many points, like it's up to you। आपको 6 पॉइंट्स देखना है, 5 पॉइंट देखना है, 4 पॉइंट्स देखना है, but it's a beautiful view behind me। अगर आप देख सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो, these are beautiful valleys and mountains। इस जगह को कहते हैं बैसरन, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और जैसे कि नीचे से आप जब घोड़े के ऊपर बैठ के आते हो, इट्स ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। घोड़े पे बैठना भी थोड़ा डर लगता है, बट इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारे सुंदर साइट्स दिखते हैं, लाइक अ वाटरफॉल कम्स इन बिटवीन। वो वाटरफॉल अभी थोड़ा हमें नहीं दिखा, बट श्योरली अगर आप थोड़ा समर्स में आओगे, इट विल बी अ ब्यूटीफुल साइट टू सी। अभी ड्यू टू विंटर्स द वाटरफॉल इज फ्रोजन, बट इट्स अनदर व्यू दैट आई कैन नॉट टेल यू। इट्स अ मेस्मराइजिंग व्यू। और बीच बीच में आपको कश्मीर वैली दिखती है, डैलियन दिखता है, ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज दिखते हैं बहुत सारे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यू ऑल मस्ट विजिट दिस प्लेस। Finally, we headed back to our hotel, and near to it there was this amazing apple tree garden with a river flowing alongside. Here you can do river rafting in summer. I took a pause here to enjoy the soothing view.
So today is our last day in Kashmir and finally we came to the Eden Resort. As you can see the beautiful resort over here, and our travel agency and the resort people, they did something special for us. I don't know what it is. Let's go and check it out. Well, at the end of the trip, we got this great surprise as they have upgraded our stay in their brand new suite of the hotel. OMG! Wow! This is so beautiful! It's got some really good interiors. Just see at the top as well. Okay, this is the washroom that's been given. Let's check the other parts of the room. Some seating areas and some couches that you can see. I think there is something more to this suit. Let's go and check that out. Oh, we have something more. Let's check it. This suit is not ending yet. Brilliant. This is so big. Oh, the jacuzzi bathtub. Oh my god. So this is the last day of our Kashmir trip, and last but not the least, I would like to thank Eden Resort and Spa for arranging this beautiful suite for us. I guess we are the first customer to have this suite, right? Yeah, that's right. It's a beautiful suit. Along with that, we would also like to thank Mr. Inayat from Kashmir Port who made all the arrangements so that we can have a hassle-free Kashmir trip, and it became the most memorable trip of our life till now. Yeah, I hope you have liked our whole trip. And if you haven't subscribed to our channel, please go and subscribe to our channel. See you till the next video.